Good evening, students. Hello. Good evening, students. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेसेस एंड बीम्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बीम्स के में स्ट्रेसेस कैसे इंड्यूस्ड होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस, और उन्हें कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बीम जिसमें टी सेक्शन हो। ओके। और टी सेक्शन के बीम्स में किस तरह से स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं, आज इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो न्यूमेरिकल इस पर आज सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, टू वुडन प्लैंक्स 150 mm and 50 mm each are connected to form a T section of a beam of a beam. If a moment of 3.4 kilonewton meter is applied around the horizontal neutral axis, inducing tensile inducing tension below the neutral axis, not tensile, tension below the neutral axis. Find the stresses at the extreme fibers of the cross section. Also calculate total tensile force on the cross section. So we have two wooden planks of 150 mm and 50 mm each are connected to form a T section. So by this wooden plank of 150 mm and 50 mm, we have a T section. Okay. The dimension of the plank is 50 mm. Okay. Now come to the problem. Two wooden planks 150 mm and 50 mm each are connected to form a T section of a beam. If a moment of 3.4 kilonewton meter is applied around the horizontal neutral axis, inducing tension below the neutral axis. Okay. यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक ये जो बीम है, सपोज ये मेरे पास जो बीम है, इस बीम में
न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की लेयर्स पर टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। ओके, ये किस केसेस में टेंसाइल स्ट्रेसेस किस केसेस में अप्लाइड होती है न्यूट्रल एक्सिस के बिलो? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेसेस तभी इंड्यूस्ड होंगे जब बीम में सैगिंग प्रोड्यूस होगी। ओके, सैगिंग लाइक दिस, the length of the bottom layer will increase only if sagging will develop due to the applied bending moment or due to the applied load. Okay, so here in this T section, sagging will develop below the neutral axis, tensile stresses are induced due to the load conditions. Here first of all we have to determine the position of the neutral axis. As we discussed in the derivation of the bending moment, that neutral axis will passes from the center of gravity of the point, center of area of the section of the beam. So first of all we have to calculate the center of area or center of area point of this T section. In the case of a symmetrical cross section of rectangular or circular type cross sections, we know that the center of area of these type of cross section will pass from its center points. Okay, so in that cases there is no need to calculate the center of area of the rectangular or cross sections of a beam, but whenever there is a T and I section of the whenever the cross section of the beam is T or I or unsymmetrical section, in that case always we have to calculate, first we have to calculate the center of area of that point. Okay, now in that case we have divided, for finding out the center of area of this cross section, we have to divide this section in two parts. First, a horizontal rectangular section, let's see this is the section 2, and a vertical rectangular section, let's say this is section number 2. Okay, sorry, 1. Okay, so first of all we have to calculate the center of area of this cross section. Okay, as we know that the bending equation for the beam is m upon I is equal to sigma b upon y, where m is the maximum bending moment of resistance applied on the cross section of the beam, and I is the moment of inertia of the cross section about its neutral axis. So in as we know that for the rectangular cross sections the moment of inertia of its about its neutral axis bd cube by 12. So but in that T section, for this that T section, we have to calculate the moment of inertia by parallel access theorem. Okay, and we know that sigma b is the bending stress developed on a layer which is at a distance of y from the neutral axis. Okay, now for determining the bending stresses, problem says that find the stresses at the extreme fibers of the cross section. So finding out the magnitude of stresses at its extreme fibers, we have to calculate the center of area of this cross section, because for finding out the position of the neutral axis, after that we can calculate the distances of extreme fiber from the neutral axis. Okay, here the neutral axis will not passing from its middle point, so the distances from the neutral axis of extreme fiber, upper extreme fiber and bottom extreme fiber is different. So we have to calculate the distances. Position firstly, we have to calculate the position of its neutral axis, so that we can determine the positions, the distances of the extreme fiber from the neutral axis, so that we can calculate the
maximum bending stress is reduced in the section. Now for calculating the center of area of this T section, we know that here this cross section is symmetrical about the y-axis. If we passing a axis from its center point, if we draw a vertical line from its center point, then about this axis, this vertical line, the section is symmetrical. Now draw a horizontal line from its bottom layer, x-axis. Section is not symmetrical about the x-axis, so we have to calculate here the coordinate of y from its origin point, because the section is symmetrical about the y-axis, so the coordinate of center of area of x is 0. Okay, so for calculating the coordinates of the center of area point, suppose this is x comma y bar. Here x is equal to 0, so we have to calculate y bar only. Okay, if let center of area of section is x bar comma y bar, here x bar is equal to 0 and y bar will be equal to the summation I is equal to 1 to I ai yi upon summation I is equal to 1 to I ai. Okay, clear? This is the section number 2, this is the section number 1. This is the y bar. Center of area of the cross section 1 from the origin point is y1, let, and center of area of the section 2 from the origin is y2. Okay, now for determining the center of area, I am calculating the center of area by a table. Section 1, section 2. Area of section 1, denoted the area by AI, and the unit of this AI is mm square. Now, what is the dimension of section 1? The width of the section is 50 mm and height of the section is 150 mm. So the area of the section is 7500 mm square. Okay. Dimension of the cross section is 150 into 50.
So the area is 7500 mm square, and section 2 is also have the dimension of 150 into 50. So the area of the second section 2 is 7500 mm square also. Now for calculating the y bar, we need the summation of the all cross section, all the sections, area of the all. We have to for determining the center of area or y bar. We have the summation. We will calculate the summation of area of all the sections. So here the area of first section is 7500 and the area of section 2 is also 7500. So the summation of these areas are 15,000 mm square. Okay, this is the summation A. Now second, centroid distance from the bottom, yeah, origin. Okay, centroid from origin, let's suppose yi, unit है mm. So what will be the y1? First, the distance of centroid of first section from its origin point or bottom layer is y1. Total, this point will passes from the center of this rectangular section 1. Okay, so the total distance of the section 1 is 150, vertical distance is 150. So the centroid will be at the 75 mm, half of the length. Okay, 75 mm. So y1 is 75 mm. y2, centroid of the section 2 will also passes from its center point. The width of the section is 50 mm. So this distance will be half of the width, height. Okay, half of the height, which is 50 mm. So the height is 25 mm. So total distance from origin point, yeah, from the bottom layer, this distance is 150 mm. So total y2 will be equal to the 150 plus 25, it is 175 mm, 175 mm. Multiplied AI, area into centroid distance. Okay, AI yi. So 75 into 7500 is equal to the 5,62,500, and 175 into 7500 will be 13,12,500. Okay, now add these values, because the formula for the y bar is ai yi, summation of ai yi upon summation ai. Summation ai is calculated
the sum of area of the sections are calculated. Now we have to calculate summation of ai yi. Here it will be equal to 1875000. Okay, this is the summation ai yi. Now we can calculate the y bar. Y bar will be equal to the summation I is equal to 1 to I ai yi upon summation I is equal to 1 to I ai. Here summation ai yi is equal to 1875000 divided by 15,000. So it will be equal to the 125 mm. Okay, so the centroid of this T section is at 125 mm from the bottom layer. Okay, neutral axis passing from its centroid point, this centroid point. Okay, now we have to calculate the moment of inertia of this cross section about its neutral axis. Now we have to calculate the moment of inertia of section 1 about the neutral axis. Here the neutral axis is at a distance of h1 from the axis, horizontal axis passing from the centroid of the section 1. Okay, and from the parallel axis theorem we can calculate the moment of inertia of the cross section 1 about its neutral axis. Okay, by parallel axis theorem. So what is parallel axis theorem? पहले तो उसको हम डिस्कस करते हैं. Firstly we have to understand what is parallel axis theorem. Okay, suppose we have a rectangular cross section whose width is b and depth is d. From its centroid, a horizontal axis, the moment of inertia of this cross section about a horizontal axis passing from its centroid point is Ixx will be bd cube by 12. Here we know that. Okay, now we have to calculate the moment of inertia of this section about a axis which is at a distance of h from the horizontal axis passing from the centroid of this cross section. If the area of the section is A, in that case moment of inertia about this parallel axis will be equal to the I is equal to the Ixx plus AH square. Okay, so finding out the moment of inertia of section 1 about its neutral axis, which is at a distance of h1 from the horizontal axis passing from the
centroid point of the section 1 will be equal to the, suppose will be equal to the, okay, moment of inertia of section 1 about its neutral axis will be equal to the Ixx प्लस आई एक्स एक्स इस जगह पे हम लिख लेते हैं I1. Okay, moment of inertia of section 1 about its neutral axis passing from its centroid. So I1 plus A1 H1 square. Similarly, moment of inertia of section 2, okay, about the neutral axis will be equal to the if the distance of the neutral axis from the axis passing from its centroid point, horizontal axis passing from its centroid point is h2. In that case, moment of inertia of section 2 about the neutral axis will be equal to the I2 plus A2 H2 square. Okay. Okay. mm. Okay. Now distance, या हम ये लिख सकते हैं moment of inertia of section about axis or say horizontal axis passing from its centroid. Okay, is इसको सपोज मैं मान लेता हूँ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और यूनिट होगी इसकी mm टू द पावर 4. नाउ फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द बी हेयर, बी इज द 50 mm. ओके, इसको थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए सेक्शन 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 के केस में इसके सेंट्रॉइड पॉइंट से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसके लिए जो विड्थ होगा वो 50 mm और जो डेप्थ होगा वो 150 mm होगा, D1. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन के अबाउट निकालेंगे अगर इस एक्सिस के अबाउट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है, that will be equal to the I1 is equal to the B1 D1 to the power 3 by 12. B1 is 50 mm, D1 is 150 mm to the power 3 by 12. Now calculating this value, it is equal to the 14062,500 mm to the power 4. Okay, सेक्शन 1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 14062,500. Okay, now calculating the moment of inertia of section 2 about its horizontal axis passing from its
centroid point. So for this section, B2 will be 150 mm and D2 will be 50 mm. Okay. Now the moment of inertia about this section, horizontal axis passing from its centroid point, I2 will be equal to the B2 D2 to the power 3 by 12. Here B2 is 150, D2 is 50 to the power 3 by 12. Clear? Now calculating this, it will be equal to 1562500 mm to the power 4. Clear? One five six two five double zero. Okay. Now we have to determine the distance of neutral axis, perpendicular distance between the horizontal axis passing from the centroid point of the section and the neutral axis. Okay. For determining this, HI will be equal to the yi minus y bar. Okay. Here y bar is 125 and y1 is 75. Okay. Axis, horizontal axis passing from the centroid of the section 1 is at 70 is a distance of 75 mm from the bottom layer, and the distance of neutral axis or from the bottom layer of the cross section is 125 mm. So the difference between these distance, vertical perpendicular distance between these two layers axes will be h1 is equal to the y1 minus y bar. Here h1 is equal to the 75 minus 125 mm. It will be equal to the minus 50 mm. Minus sign shows here that the centroid point is below to the neutral axis. Okay, centroid point is below to the neutral axis. Now h2 will be equal to the, similarly h2 will be equal to the total y2 is 175 and y bar is 125. So the difference between the distance between the neutral axis and the horizontal axis passing from its centroid point is 175 minus 125. Here h2 will be 50 mm. h2 will be 50 mm. Clear? Now for calculating the moment of inertia of the section about its neutral axis, we have to calculate AI HI square. Okay. So the area of the section 1 is 7500 mm square. Okay. And area of the section 1 is 7500 mm square, and the distance from the neutral axis h1 is 50 mm. Okay. So calculating this, it will be equal to 18750000. Similarly, area and the distance from the neutral axis of the axis passing, horizontal axis passing from this centroid of the section is same. So AIHI square is equal to same. Now
For calculating the moment of inertia of section about its neutral axis will be equal to the I1NA plus I2NA, as we know that I1NA is equal to I1 plus A1 H1 square plus I2 plus A2 H2 square I2NA is, or say I1 plus I2 plus A1 H1 स्क्वायर प्लस A2 H2 स्क्वायर। टेबल में जो वैल्यूज हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के I1 I2 इसे ऐड कर देंगे हम। दिस विल बी इक्वल टू I1, दिस इज इक्वल टू I2। नाउ इसको ऐड कर देंगे टोटल वैल्यूज को, ओके। और यहाँ A1 H1 स्क्वायर, तो ऐड करते हैं इसको पहले तो हम 140,625,00 प्लस 15625,00। टोटल वैल्यू आई 15625,00। okay, and the total sum of our AI HI square is 375,00,00,00. Okay, for determining the value of I, moment of inertia, will be equal to the 5312.5 into 10 to the power minus 8 mm to the power 4. Oh, mm to the power meter to the power 4. Okay, meter to the power 4. Now calculate this. We have to calculate the stresses about the extreme fibers. Here, distance of extreme fibers from its neutral axis is y1 and y2. Here y1 is equal to the 125 mm and y2 is equal to the 125, 200 minus 125, 200 minus 125, 75 mm. Okay. Now the bending stress at the extreme top layer will be equal to the sigma 2 is equal to the m upon I into y2, and bending stress at the extreme bottom layer will be equal to the m upon I into y1. Clear? Now, as we know that bending moment is 3.4 kilonewton meter, m upon I into y1,
Here m is 3.4 kilonewton meter divided by I 5312.5 into 10 to the power minus 8 into y1 is 125 mm multiplied by 10 to the power minus 3. Clear? Now the bending stress at the bottom extreme fiber will be equal to the 8 into 10 to the power 6 Newton per meter square, or say 8 mega Newton per meter square tensile, as mentioned in the problem also. And the stress at the extreme top layer will be equal to the sigma 2 is equal to the m upon I into y2. Here m upon I 3.4 into 10 to the power 3 divided by I is equal to 5312.5 into 10 to the power minus 8 into y2. Y2 is equal to the y2 is equal to 75 mm. Y2 is equal to the 75 mm. So multiplied by 75 into 10 to the power minus 3. Now calculating this value, 3.54 into 10 to the power 3 multiplied by 75 into 10 to the power minus 3 divided by 5312.5 into 10 to the power minus 8. Bending stress will be equal to the 4.8 into 10 to the power 6 Newton per meter square, or say 4.8 mega Newton per meter square. Now एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं हम इस प्रॉब्लम को। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक बीम था और इस बीम में गिवन था कि जो सेक्शन है बीम का वो टी सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन जो बीम का है वो टी क्रॉस सेक्शन है, और जो कि लकड़ी के 2 प्लैंक्स के थ्रू बना हुआ है। ओके, कुछ इस टाइप से। ओके, इस टी सेक्शन के डायमेंशन दिए हुए थे प्लैंक के 150 इंटू 50, 150 इंटू 50। क्लियर? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की लेयर्स पर टेंसाइल स्ट्रेसेस है, टेंशन है। न्यूट्रल एक्सिस जो है सेक्शन की वो कहां से पास होगी? अगर सेक्शन अनसिमेट्रिकल है, या आप, मैंने बेंडिंग क्वेश्चन बताया था, जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो उसके सेंट्रॉइड पॉइंट से पास होती है। ठीक, अब ये सेक्शन अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। अनसिमेट्रिकल सेक्शन के केस में जो सेंट्रॉइड पॉइंट है पहले तो उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। सेक्शन हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो मैंने बॉटम लेयर से पास होती हुई एक एक्सिस ड्रॉ की, उसे एक्स एक्सिस माना।
वर्टिकल लाइन y बिल्कुल सेंटर से मैंने पास किया। यहाँ इसके ओरिजिन पॉइंट से डिटरमाइन करना है हमें डिस्टेंस y बार। ओके, क्योंकि हमें एक्सट्रीम फाइबर्स पर डिस्टेंस, एक्सट्रीम फाइबर्स पे हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रेसेस। तो बेसिकली y बार डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो हमने इसे सेक्शन को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन जो वर्टिकल है 1, और सेकंड सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है। दोनों के एरियाज फाइंड आउट कर लिए यहाँ पर 150 इंटू 50 एंड 150 इंटू 50। y1 वो पॉइंट है फर्स्ट सेक्शन का सेंट्रॉइड पॉइंट फ्रॉम दी बॉटम लेयर। जब भी हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेक्शन का, तो हम उसमें ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, वो हमारा फिक्स होता है। ये बात हमें पता होती है पहले से। तो y बार जिस एक्सिस से, जिस ओरिजिन पॉइंट से हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसी ओरिजिन पॉइंट से सेक्शन 1 का सेंट्रॉइड पॉइंट हमने डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया। और ये जो सेक्शन 1 का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, ये कहाँ पर होगा? उसके विड्थ के हाफ पर, उसके डेप्थ के हाफ पर। यहाँ पर इसकी हाइट दी हुई है 150, तो इनके 150 का हाफ करेंगे तो 75 mm, तो 75 mm पर होगा 1y1। सिमिलरली जो सेक्शन 2 के अगर सेंट्रॉइड पॉइंट की बात करें, तो सेंट्रॉइड पॉइंट इस 2 का 50 mm इसकी हाइट थी, तो 50 mm 25 mm हाइट, मतलब हाफ सेक्शन पर। और टोटल इसके बॉटम लेयर, फॉर सेकेंड सेक्शन का बॉटम लेयर टॉप इस सेक्शन के, टोटल सेक्शन के बॉटम लेयर से 150 mm डिस्टेंस पर है। तो 150 प्लस 25 175। एरिया हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। वी कैन कैलकुलेट दी वाई बार हमने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हमने सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके किस तरीके से निकाला? सबसे पहले हमने सेक्शन 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उसके ही क्रॉस सेक्शन के अबाउट, सॉरी उसके ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया उस सेक्शन से उस सेक्शन से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, जो उसके सेंट्रॉइड पॉइंट से पास हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर जो B1 है और D1 है, उसकी वैल्यूज को हमने उसके अकॉर्डिंग देखा। B1 पैरेलल जो डायमेंशन है, पैरेलल डायमेंशन 50 mm थी, तो 50 इंटू 150 टू द पावर 3 बाई 12 mm टू द पावर 4। सिमिलरली I2 सेक्शन 2 का हमने उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, जो कि उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा था। और यहाँ पर B2 D2 टू द पावर, B2 यहाँ पर हो गया 150, क्योंकि जो पैरेलल डायमेंशन है एक्सिस के वो 150 mm था, है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर पैरेलल डायमेंशन 150 mm है। ओके, सो और परपेंडिकुलर डायमेंशन 50 mm है, तो 150 इंटू 50 टू द पावर 3 बाई 12। और हमने यहाँ से इसको I1 I2 डिटरमाइन कर लिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू दी I1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। एंड फॉर second section, moment of inertia about its neutral axis I2x is equal to I2 plus A2 H2 square. Clear? I1 I2 has been calculated by us. Okay, A1 A2 is also calculated by us. Now H1 H2 can be calculated by the formula HI is equal to the yi minus y bar. Okay, and final moment of inertia about the neutral axis about the cross section, sorry, of the cross section about its neutral axis will be I1x plus I2x. ओके, यहाँ से जैसे ही हमने डिटरमाइन किया, तो उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन हम यूज कर सकते थे। बेंडिंग इक्वेशन यूज की, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। आई हैज बीन कैलकुलेटेड बाई अस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में सिर्फ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने का है। ओके, बैंडिंग मोमेंट आपको या तो इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, और एक्सट्रीम केसेस में क्या करते हैं, इसको आप हमें कैलकुलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू दी बीम एंड दी लोड कंडीशंस। ओके, यहाँ अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस सेक्शन का अगर हम बनाएं,
तो वो कुछ इस तरह से अब बना सकते हैं हम। एक्सट्रीम फाइबर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है वो 4.8 आ रही है अब टॉप लेयर पर। तो इस एक्सेस के अबाउट अगर हम लेफ्ट साइड में माइनस में जाएंगे तो यहाँ हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को दिखाते हैं, और इस एक्सेस के अबाउट राइट में जाएंगे तो हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्केल से एज्यूम करते हुए हम इसे बनाएंगे, और मिडिल से नहीं पास हो रहा है ये, चलिए कोई नहीं। और बॉटम लेयर पर जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो है 8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कुछ अप्रॉक्स 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो आप, यहाँ से शो करने के लिए 8 या हाफ कर लीजिए स्केलिंग करके, और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। क्यों मिला रहे हैं, यहाँ देखिए बेंडिंग स्ट्रेस एम अपॉन आई, बेंडिंग मोमेंट और आई कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू दी वाई। तो जो लाइन ड्रॉ होगी, ये वाई है, ये वाई एक्सिस पे हम लेयर्स की डिस्टेंसेस बता रहे हैं भाई, कितनी, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से वाई वाई डिस्टेंस पर कितनी स्ट्रेसेस हैं। तो स्ट्रेसेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वैरी करेगा एक लाइन के अलोंग, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन है, याद रहेगा। ये एक आपकी यहाँ पर आ गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो।